there is something which is 3D plots. अभी तक तो अपन 2D की बात कर रहे थे. Now we'll talk about 3D plots. Like scatter हो गया, bar हो गया, एक और कौन सा होता है, ऐसी normal line वाला होता है. So these are 3D plots. इतना कोई काम आता नहीं है 3D plots, but since it is there, we'll talk about it. Okay. Now, पहली चीज में आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? 3D प्लॉट बनाने के लिए what is the toolkit? This is the toolkit. mpl underscore toolkits dot mplot 3D, and it will import the 3 axes. And now we are using from keyword, not the import keyword for this. क्योंकि मैटप्लॉटलिब की ही एक मॉड्यूल है जिसका नाम है mpl toolkits. तो हम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कर चुके हैं. अब उसमें से इसके अंदर में से भी इसको इंपोर्ट करना है. Are you getting my point? Okay, so can we do like matplotlib dot the module name dot library name? Can we do No. like this in Python? This is how you write it. You can't change the syntax or the function which has already been described by the particular person who designed it. And I'm just trying to understand. I'm trying to. No, I'm just telling you, Baba, कि आप वो चीज नहीं change कर सकते हो, right? उसने एक पर्टिकुलर चीज बना दी है. उसने पूरा एक मैटप्लॉटलिब बनाया, उसके अंदर सेवरल डिस्क्रिप्शंस बनाया, उसमें पाइप्लॉट था, पाइप्लॉट के अंदर भी एक टूल किट था, उस टूल किट के अंदर भी एक प्लॉट था, 3D प्लॉटिंग थी, और 3D प्लॉटिंग के अंदर भी एक पैरामीटर था जिसको बोलते हैं एक्सेस 3. आप इतना ज्यादा घूम रहे हो, तो जब आप इतना ज्यादा घूमते हो, तो अगर मैं इस चीज को कॉम्प्लिकेट कर दूं तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? प्लॉटिंग से. मुझे प्लॉटिंग से लेके उधर तक इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो उसने क्या किया, उसको रैंडमाइज कर दिया, उसको एक ट्री जैसा कर दिया कि अच्छा, अगर तुझे सिर्फ 3D चाहिए तो तुम सिर्फ इसको बुलाओ, अगर तुम्हें ये चाहिए तुम इसके थ्रू इसको बुलाओ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन. Yeah, in that case, if I'm writing only the first line from toolkit and I will not write the second line, will that work? You mean to say this? Yeah. Then your other things won't work. Only like if only the 3D function, whatever is there inside the toolkit. It will only give you the axis, 3 axes, X, Y, and Z, and nothing else. No plotting, nothing. Only it will provide you 3 axes. That's it. Are you getting my point? Okay. This particular toolkit will only allow you or only deliver you 3 axes. That's it. But plotting into the axis and understanding what a particular axis is doing will be with the help of matplotlib. I'm still a little confused for that from and then import something like those line. I'm getting confused there. Hello. Yes. Ma'am. Ma'am, the actual point what I want to ask over here is, if suppose we have already called the import matplot in previous functions or somewhere, so after that can we directly write the from function over here? What function? Ma'am, like if we have already imported matplot. Yeah, then you need not write to like matplot again and again. Again. Yeah. The same thing means if we have already, yes, if we have already imported it, so we don't have to write it again in this particular function. We can directly write from. Yeah. Now you see, what does the value array say? That unknown projection 3D. They don't know what projection 3D is. And how many axes it is passing? 0 axis. And how much data it is giving? 3 axis data. You're confusing you're confusing your graph. You are giving 3 axis data, but you are not telling the number of axes. Are you getting my point? Axis तो अभी भी 0 ही है ना, पर तुम वैल्यू दे रहे हो. तुम खाना दे रहे हो पर प्लेट नहीं दे रहे.
तो गधों जैसी बात होगी ना. यू नीड टू टेल देम कि भाई ये 3 एक्सेस है, इसलिए मैं तुम्हें 3 डेटा दे रहा हूँ. प्रोजेक्शन मेरा 3D है. क्यों 3D है? क्योंकि मैं तुम्हें ये पर्टिकुलर डेटा दे रहा हूँ. समझ में आ रहा है? सो हमें एक्सेस डिफाइन करना बहुत जरूरी है. डिफॉल्ट में एक्सेस 2D तो है ही, पर अब मुझे 3D पे काम करना है. तो मेरे पर्टिकुलर ग्राफ को कैसे पता चलेगा कि अब मैं 3D पे काम कर रही हूँ? जब तक मैं उसको प्रोजेक्शन नहीं दूंगी तब तक उसको पता चलेगा क्या? नो, राइट? सो आई नीड टू टेल द पर्टिकुलर पर्सन कि नहीं, तुम्हारे पास अब 2D नहीं है, तुम अब 3D पे काम कर रहे हो. एंड वो बताने के लिए वी हैव दिस पर्टिकुलर टूल किट विद अस. डिड यू गेट दैट, प्रिया? अगर ये नहीं होगा तो कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि वो डिफॉल्ट 2 एक्सेस ही लेके चल रहा है ना. Okay. So it is just an indication, like, or we are importing those libraries and the class, then using it. Is that हाँ, the we case? are just telling him कि अब कि ये इंपोर्ट करके हमने उसको बता दिया कि तेरे पास x, y और z है. अब you have 3 axes now. You have to work with 3 axes now. Are you getting my point? अगर मैं ये सबको हटा दूं, ठीक है, और मैं प्रिंट करूं, अब इसको पता है कि इसके पास 3 एक्सेस. कोई डेटा दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, पर इसको ये पता चल गया कि इसके पास अब कितनी एक्सेस है? 3 एक्सेस है. इसका प्रोजेक्शन कैसा है? 3D है. और इसको ये प्रोजेक्शन कैसे पता? जब हमने इसको एक्सेस 3D का टूल किट दिया. समझ में आया? Yeah. हाँ? Yes, yes. Okay. And one small doubt, like, I'm sorry, I'm disturbing you a No, lot. it's okay. Completely fine. So, like, the import keyword we always use with packages, and the from keyword we use with libraries. Like, correct me if I'm wrong. अभी scalar तो Nothing import like हो गया that. ना. But if I want to import the pre-processing part of scalar, I do not write import scalar. I write from scalar.preprocessing input standard scalar. This is what I write. अगर मॉड्यूल हमने इंस्टॉल कर रही है तो मुझे मॉड्यूल वापस इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. फिर मुझे वो पर्टिकुलर चीज बुलाने की जरूरत है. दैट्स इट. Okay. ये पैकेज नहीं है. matplotlib तो एक पैकेज है, इसलिए इसको तो इंपोर्ट करना पड़ेगा. Correct. राइट? In the first line, I got confused actually. First and third, from one. अब मैंने क्या किया इसके बाद? मैंने तीनों एक्सिस के नंबर बता दी कि एक्स एक्सिस पे ये प्लॉट करना है, वाई पे वो प्लॉट करना है, जी पे ये प्लॉट करना है. और फिर मैंने ax1 डॉट प्लॉट कर दिया. सो आई गॉट दिस. अब इसको रन करेंगे. मैम, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? जब तक आप इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वो चीज थोड़ी सी वियर्ड लगेगी. राइट? होता है. इसलिए आई विल गिव दिस नोटबुक आज ही सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट. आई गेस मैंने आपको वो लिस्ट वाली भी चीज उसी दिन दे दी थी. एंड आई होप कि थोड़ा प्रैक्टिस करके तुम्हें आपको समझ में आ गया कि कैसे उसको परफॉर्म करना है, कैसे लिस्ट के फंक्शंस को यूज करके आप मैनिपुलेशन करते हो. राइट? अगर आप इसको इफ यू गो थ्रू दिस टू यू कैन कम टू अ पॉइंट, यू कैन कम टू अ कंक्लूजन. Okay, now I wanted to show you something. This is a bar chart. अब imagine a bar chart. एक ब्लॉक को बस इमेजिन करो. इस ब्लॉक को सिर्फ इतना ब्लॉक लो, इस सबको गायब कर दो. ठीक है? सिर्फ इस चीज को लो. अब मैं जब ये चीज ले रही हूं तो इसमें क्या क्या आ रहा है? इसमें x आ रहा है, इसमें y आ रहा है, इसमें z आ रहा है. और ये चीज बनी किसमें है? ये x y z ऑलरेडी में बनी हुई है. समझ में आ रहा है? क्योंकि ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक भी 3D हो गया
और बन भी 3D पे रहा है। अगर मैं इस ऊपर जाऊं तो यहाँ पे डॉट का कोई ये डॉट 2D नहीं है। ये लाइन पे जाओ तो लाइन क्या है, 1D है, राइट? ये लाइन कोई 2D या 3D नहीं है। पर अगर मैं बार, एक छोटा सा बार लूं तो ये तो खुद अपने आप में 3D है। ये बात समझ में आ रही है? आप 3D ग्राफ तो बना रहे हो, पर आप बार, जो बार बन रहा है वो खुद भी 3D है। Yes. Are you getting that point? So आपको ये x y z तो बताना ही है कि ये x क्या होता है, ये y क्या होता है और ये z क्या है, पर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये x, y और z की वैल्यू क्या होगी। समझ में आया? Yes, Prachi. इसलिए we write this dx, dy and dz. Any problem? मैंने पढ़ा ये वंस, फिर जीरोस भी पढ़ाया था, एम्प्टी भी पढ़ाया था, इफ यू रिमेम्बर, एनपी में। सो वंस क्या करेगा, सिर्फ 10 बार 1 1 1 1 प्रिंट कर देगा। सो dx dy मेरा 1 1 1 1 1 है 10 बार, और मैंने dz को कुछ डिफाइन कर दिया। एनी प्रॉब्लम? Any problem? No, Prachi. It looks like we need some hands-ons Yeah, to get it comfortable. Exactly. Like you it looks. practice it today. बहुत सारे ग्राफ्स हो गए ना, तो you practice it today, और फिर कल कोई ऐसे करते करते कुछ डाउट आया या कुछ कहीं अटक गए, then we can discuss it, right? Prachi, just an request. Can you share all those data and all those this particular file with us? Yeah, I'll do that. Definitely, I'll do that. The moment we thanks a end the lot. class, I'll give it to the sir, and he will share it with you. Right? What did we learn today? We learned pandas and numpy performance, right? pandas से कैसे डेटा फ्रेम बनाया और उसको फिर कैसे न्यू कॉलम करके कैसे हमने उसको यूज किया एक पाई चार्ट बनाने के लिए, ठीक है? We learned लाइन चार्ट, उसमें एक्स लेबल, वाई लेबल, लेजेंड्स, कलर्स, फिर पाई चार्ट, उसके अंदर ऑटो पैक, उसके अंदर एक्सप्लोड, ठीक है? फिर टिकर्स, हमने टिकर्स के बारे में थोड़ा बहुत सुना कि कैसे हम इंटरवल को चेंज कर सकते हैं, हम कैसे मैक्सिमम इंटरवल, मिनिमम इंटरवल रख सकते हैं। फिर हमने क्या बात की, हमने हिस्टोग्राम किया, हमने बार चार्ट किया, हमने पता किया कि कैसे हम 3 ग्राफ इकट्ठा एक जगह पे बना सकते हैं, राइट? फिर हमने और क्या किया, हमने एक ही ग्राफ के अंदर 2-2 लाइन बना दी। Are you getting my point? फिर हमने क्या पढ़ा, हमने सेपरेट कैसे करना है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को, वो देखा हमने। फिर उसके बाद 3D प्लॉट्स देखे, कितने तरह के, हमने स्टैक प्लॉट देखा, हमने स्कैटर प्लॉट देखा, एंड सो ऑन। उनके कुछ कुछ फंक्शंस। एनी प्रॉब्लम? No problem, Prachi. Like this, everything is so new, so. Never mind with that. You all practice it. आज कल जितना टाइम लेना है आप लोगों को आप लीजिए, ठीक है? And then after that we will. I want to interrupt here. Priya, tomorrow anytime you people have, because we need another session. So. In this week, you're asking, Prabhat? Tomorrow. Wait, 1 second, I'm checking. Anita, Vaibhav. Prabhat put just 2 to 3 days to get time दियो ऐसो practice करे अपन, then I think okay, fine, class fine. Then we'll follow as per the class schedule. Okay. Yeah, Prabhat, like it's so too much thing in a very short span of time. तो सत्य पे catch करियो को टिके time. Okay, fine. Okay.
Okay, we'll follow the schedule class. Okay, right. Yes, sir. It is very difficult to concentrate on both the sides, like Or uh, we simultaneously office work as well. Or we can do one thing, like tomorrow, anytime if everybody is free, we can just connect among ourselves and we can just practice. If that can help everybody, we can do that. So Yeah. okay, first Okay. you practice, then we'll see tomorrow. We'll sit down. Okay, Prachi, continue. Yeah, and also we can do one thing. You take your 2-3 days क्योंकि किसी का ऑफिस होता है, वो होता है, ये होता है. So maybe weekend पे या कुछ time बाद एक class लेके we'll discuss this again. We can do that, right? So don't worry about it. आप you all guys take your time. जिस दिन आपको लगा कि नहीं मुझे एक और बार हमें discuss करना है मुझसे, so we'll meet that day and we'll discuss. It sounds pretty cool, right? Yeah, sure, Prachi. Yeah. Yeah. So I'll just name it as rename it, and I will download this. Okay, so the moment the class gets over, I will share it with you. Oh, no pop-up. Okay, so any doubt, any question till far about anything you want me to ask? भले वो कुछ भी हो, NumPy, Pandas, list, whatsoever. Do you have any doubt? I know you may have a certain number of doubts in Matplotlib, maybe because you haven't tried it with yourself yet. But anything apart from that? See, we can't say about the doubts until we practice. Hmm? We can't say about the doubts now because we like until the practice we cannot say anything. Yeah. So we have learned about the package. Today's package was Matplotlib, right? And also I wanted to, I don't know, shall we move forward? I wanted to share 1-2 codes using while or something with you. Are you all fine or you want to not do that? If it's too much, we will not do it. If possible, we can do this in weekends. Huh? We can do this in weekends. We can do We it will as need on. to practice. Okay, so you practice, Matt. I'm not teaching you anything right now. I guess this was too much for today. So you Yeah. practice this, and then if we meet in the future about discussing about all these stuff, then I will share 2-3 more practicing chords and something like that with you all. So that would be better, right? So do you guys have anything you want to say? Last comments, anything for this session, today's session? Prachi, I have a query, like for learning purpose, like in most of the IDEs, we get all the functions defined in any file or any libraries, like to get the what do you say? Like we have list, right, in Python. So in the list, if we do dot, then do a space or tab space, it will suggest us or give us hints like what all functions are there which we can use on list. So is there something we can do for all other libraries, or like to get a overview like what all are there exactly? Yeah, it happens wherever you have several arguments or quarks. KW stand for quarks. Okay, KWARGS is the spelling. Wherever you have arguments or quarks or expressions or regex, so there they simply mention you, okay, do you want this, do you want this function, do you want that function? So
There are. Like to get a quick suggestions or Yeah, to get definitely some there ideas are. about. You will get In the it if Jupyter they also have we mentioned it can to see you. that. Yeah. No, in Jupyter also we can get that. Jupyter, yeah, if you have, they you know, by default they show you up. If they have the particular function and the particular suggestions with them, they will show you the default. They mainly for higher, they focus mainly for the higher packages. Matplotlib and the plotting they don't focus. But if you go with Seaborn, or if you go with TensorFlow or something, then there are certain functions and certain libraries which shows you that particular suggestions. So it depends. See how a bar chart has been coded. So you have a particular class, a particular object, and then a class, and in that class you have a self and you have some arguments. Okay, you have end Yeah, or you have your self thing, right? And then that when you that I run the got whole it. function. Sorry, that I got it, but what I was trying to get, like whenever we are writing like bar function or pi function, is there any shortcut key which we can press and get some idea like how No, to there write is that nothing like function, that. how many arguments is the It correct could way be to. done in Google Colab. Google Colab will do it because it works on the Google Cloud, so it shows you automatically. But since Jupyter works onto your local host, it does not give you that. It does not give you that. It has not given me any suggestion. Maybe I was working, right? So did you see any Mhm. suggestion? No, that's So what I because was it does wondering. not do that. You don't have any shortcut key for that. If it's in default, it will show you. Are you Okay. clear? Okay. Any other thing? Any other last comment suggestion for this session? Okay, then you practice. That is what I would prefer and would say. You practice. आप लोग सब practice कीजिए, and then you have doubts or whatsoever, we will meet again. Okay. Yes, Prachi. Yeah. Yeah, So sure. see ya. Have a good day and a good office Yeah. work. Thank you. Bye. Thank you. What is Google Colab? Anybody knows what Google Colab is? Okay, wait a second. Google has introduced a collab where you can run the notebooks and store the data in the cloud. Okay. It performs exactly like Jupyter, exactly like Jupyter. There is no difference between Google Colab and Jupyter. But the only thing is it works on the cloud and this works on the local host. If you go to with this place, they will ask you connect to hosted runtime or connect to local runtime. If you go to the runtime and if you want to change run type, so there is none, there is GPU and there is TPU. TPU, it's gigabyte and terabyte. Okay, so this basically works onto your Google Cloud. So your Google Drive cloud has this type, this amount of RAM remaining and whatever. So it will show you everything. So you have 0.80 GB and the total GB I have is 12.72. This is how it works. You have to, nothing else. You can do whatever you want to do without using the local host. So if you're training a large model, you don't have that much of memory or your computer gets hanged. So people generally use Google Colab for that. Or if you want to share the code with someone at the same time, so you just need to copy this particular address and you need to send that particular, or you can use the share. You can share this particular thing with someone. You can write that. And then the particular person can also code with you simultaneously. So this is what Google Colab is all about. Okay.
So see you soon, right? So we'll again meet in the next session and we'll discuss about your doubts and everything, right? Okay, so good day and that's it. Yeah, thank you, Prachi. You're Thank you. welcome. Prachi. Have a good day. Happy birthday? Thank you, ma'am. Have a good day. Okay. I thought you said happy birthday. Never mind. Okay, see you soon, right? Bye-bye. Bye. Bye. Yeah, bye, Prachi. Thank you.